Okay. Mhm. Okay. So this is our target here, right? 1000 hours in 2023 at least. We are 19.6% complete. I personally feel that something good must happen once we are um, more than 25 or 30% or 40% and things like that. And certainly more than 50% should be bringing a lot of good things, I personally feel. But we shall see. So let's move. Correct? Yep. Okay, so we'll start obviously with India first. So there is India, and related to India is obviously China because it has got borders, Ladakh, Arunachal Pradesh, Eastern Ladakh. Correct? These two are certainly there, and then India also have relationship with Pakistan. Nepal is there, Bhutan, Sri Lanka, also with Bangladesh. Correct? This is India's neighborhood, and also to some extent Afghanistan as well. This is India's neighborhood. Hmm. Correct. So now what we'll talk about? We'll talk about China now. It's going to be a topic of international relations, I think, forever now, as US and China both are there in contention with each other. So let's talk about China. China has a Chinese Communist Party, CCP. It was created somewhere in, I guess, 1920 or so. There is mainland China, and there is Taiwan. Correct? Which China wants to have. Correct? There is also related to China, Hong Kong as well. Hong Kong was a British territory. China especially is known for its trade now. Power into trade. Economy is obviously 17 trillion USD, although GDP per capita is not that much high because of roughly 1.4 billion population, which is quite heavy compared to US 400 million or so. Correct? Okay, let's have it more. So obviously we can see that China has an economic side. Correct? Economic side. It also has a political side. It was freed in 1949, was part of opium trade. Two eminent people are very much important. I mean, Marxism and Confucius. This is related to ancient China, and obviously this is related to modern one. China gives a lot of loans as well, asserts itself into South China Sea, claims almost all of it, and that is where things started becoming a little bit problematic, especially after India zooming off
Xi Jinping. Correct. China also has issues with Japan on some of the islands. So it's territorial integrity, which is a problem. Correct? We'll talk more about it, but let's talk about its economic side again. China, the economy, has a lot of factories. Some of the important cities are Beijing, Shanghai. GDP totally is 17 trillion. Takes oil from Russia. He recently has brokered a deal between Saudi Arabia and Iran. Obviously, is part of BRICS, SCO, as well as which one? Belt and Road Initiative. Correct. But is not part of Quad or AUKUS. Not part of. Correct. So BRICS, SCO, and BRI, Belt and Road Initiative. Uh, Now Beijing is there, Shanghai is there, and what more is there? There is also one more state, Xinjiang. Human rights violations are rampant, at least the way it is reported. So that's the case. What more we want to know? We shall see. So let's get to it. Against China. China has a trade war with the US going on. Especially it started with Trump, but it is still continuing with Biden as well. Before there was Obama, before there was Bush. As presidents, not saying that they were having the trade wars. Okay? But from here onwards, it is continuing and seems like that 2024 US elections are gonna be important. It's going to be important. The Republicans already have a majority in Senate. Two parties are there, Republican and Democrats. Correct? But again, it can be anyone's way. But it appears most likely that trade war is gonna continue, no matter who comes in one way or the another. Correct? Next up comes China's military power or defense and things like that. Correct? Let's move. Mhm. Mhm. Yep. So we have China defense. Defense obviously has got three: Air Force, military or army, and then we have got Navy. China have nuclear power. In fact, has given it to Pakistan as well. As much as crucial as Pakistan is in China's calculation, because to nullify or somehow create pressure on India for that matter, which also now have nuclear. Not now, it also had nuclear arsenal. Correct? So all the three have nuclear. Tremendous equation that is. India, China, Pakistan, all three have nuclear bombs or arsenal, whatever you want to call it. So in that way, it becomes kind of a sure thing that no escalation is gonna become too escalated. Otherwise, everyone is gone. Correct? Correct. Militarily, none of them will take too many off actions. Okay, and whenever it happens, it will very soon shift into trade.
because you can't use the nuclear option in one way or the another. The saying, correct? Navy, it is certainly expanding. I'm not sure very much about it. And Air Force, again, I don't know very much about it. Military as well, not sure very much about it. But obviously, they can always hire. Correct? Yep. So, Navy certainly they have invested enough because they want to dominate Indo-Pacific. Yuan 5 recently was in news for being Hambantota port. They are building a lot of ports all around as well. India is doing as well. Chabahar port in Iran. So, navigation is certainly going to be an issue going forward. Navigation, which obviously involved pre-Indo-Pacific, which will involve navies, strong navies, in fact, and that means strong means maybe even nuclear armed navies. Correct? One of them, two of them, or in fact, in one way or the other, Australia and New Zealand. Australia has been in deal with first France, but later it acquired nuclear arsenal in navy from the UK. So AUKUS was made there in this way. Correct? Correct. So UK and US will help Australia get nuclear powers. Don't forget that UK and US both are in P5, Permanent 5 of UN Security Council. So let's talk about it a little bit. UNSC. UNSC, it is UN Security Council. It's part of UN. UN also has UNGA. It has got a secretariat. It has got even an ICJ, UNESCO, and there is UNICEF as well, and things like that. But these two are very much important. This is related to climate change, and Security Council largely works upon the security provided by five nations. That is what? UK, US, France, China, and Russia. India doesn't have it. Japan doesn't have it, Brazil doesn't have it, and Germany doesn't have it. These are G4 who thinks or talks about expanding the UNSC. It has expanded 5 permanent, 10 non-permanent and rotating, things like that. But it seems like that certainly there's gonna be some change here, although it's quite uh, complex in terms of nature. Okay, this was created by the way back in 1945. Since then, many institutions have been created because of its absence. Okay, let's move then. So, what we have talked about here? We have talked about India, we've talked about nuclear arsenals, we have talked about Indo-Pacific, we have talked about P5, BRICS, we have talked a lot about China, and we have talked about what? We have talked about economy a little bit as well. Correct? And UNSC and India's neighborhood. India's neighborhood. Little bit we have also talked about the US as well. This much largely has been our discussion as far as I can see.
Correct? Shall. So what we will do from here onwards? Obviously, economy is something that we can talk about every nation's economy. In that, obviously, we will talk about US, China, and India, and slowly, most likely, we will build upon that. These three economies we will certainly talk about. Largely G7 and G20, which are again economically oriented groupings, and Indo-Pacific will certainly be a major point of our discussion because this is where the geopolitics is happening, other than the Ukraine, which is another front now, which G7 and G20 both have to deal with. And climate change is a front that everyone is dealing with or will have to deal with. Correct? So, no problem should be there. Now, let's move. Uh, yes. I want to stop here little bit, not too much. So, Indian economy, US, China, yes, we have got one more that needs discussion. As far as the economy is concerned, we need to know about these G7, G20 in one way, P5 as well, India, China, US, and EU. To some extent, ASEAN as well, and a little bit about Africa will not hurt. Australia, Brazil, and obviously we will talk about some of the very best ones like Lebanon, Afghanistan, Sudan, Yemen, and so on. Correct? So, where do we continue? You already know that this is something which, I mean, there will be a static part and will be a dynamic part. So it seems like that it will probably never really finish off, but we shall move around it. Let's try to see what happens. We will see. Correct? Correct, sir. So let's talk about the P5 and the UNSC. It was created in the backdrop of World War II, which ended in 1945, started in 1939, ended with the use of atomic bomb, and it was Germany, Italy, and Japan. These three were together, and then US, UK, France, and even Russia took part in that, and they have beaten them. Correct? Hmm. Especially because Germany shares a lot of borders with Russia. Okay, so democracy is another thing then, which was imposed on Japan later, and somehow also was embraced by Germany as well. I'm not sure about Italy, how things happened there, and the political system there as well. But US certainly proposed or declared or somehow tried to uh, either impose democracy on a lot of people or human rights for that matter, or basically things like that. Okay, so we will obviously talk about history here as well in one way or the other, sooner or later, especially the 20th century and the 21st. Then obviously, which is 23% already loaded. We've got SDGs in it, climate change in it, and a little bit of backsliding of democracy we are also saying. Correct? Let's move. Some of the most important events that has happened of late is 1945.
1991 in case of India, 2008 global financial crisis, and 2021, 2, sorry, is Russia attacking Ukraine. By the way, behind it is NATO as well, a little bit, certainly it is. And this is related to this one, or Soviet dissolution for that matter, which included Eastern Europe, which was different from Western Europe, which has got a rich history since 7 when they arrived in Plassey, Battle of Plassey and things like that, or even before you can lead it ultimately to 1453. Correct? So roughly 500 years of history is very much important. In that, science and technology has, and nowadays, technology is really disrupting everything, especially now with the coming of the AI, 5G, Internet of Things. गुड मॉर्निंग। अकेले ही लगे हो आज सुबह सुबह? अरे आजकल तो अकेले के लिए लगे हैं, और स्पेशली अब मुझे लग रहा है कि शायद टाइम चेंज हो जाएगा। खैर तुम बताओ, आज तो सुबह मिल गए हम लोग। मेरा टारगेट पर्सनली देखो ये है, दिखाता हूँ। 196, 196 आवर्स हो गए ऑलमोस्ट। 2023 में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 1000 आवर्स कर लेने चाहिए लाइव। अब उसमें फ्री टैरो करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, फिर डिस्कशन करने का भी मन नहीं कर रहा है, तो यही पढ़ा रहे हैं। है ना? बाकी भी चल सी। आज सुबह कैसे उठ गए? सुबह उठे नहीं है, उठे तो हम रात भर के हैं, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये होगा। अगर मैं यही करता रहा तो फिर इसके लिए तो मुझे रात में लाइव आने की जरूरत नहीं है ना, ये तो मैं कभी भी पढ़ा सकता हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, शायद ये कंटिन्यू होगा, बट वी शैल सी। कुछ पता नहीं, टू बी ऑनेस्ट। शो कर रहा है ये, तुम बताओ। यू से 1453, 1945। पर पढ़ा किसको रहे हो? कोई नहीं दिख रहा, किसी को नहीं पढ़ा रहे, बस बस लाइव है। क्योंकि जब लाइव है और जब पढ़ा रहे हैं तो कुछ और तो नहीं कर रहा है। तो मैं कर क्या रहा हूँ? देखो, दो तरीके हो सकते हैं ना, या तो मैं लाइव हूँ, और या तो मैं इसमें फ्री टैरो कर रहा हूँ, जो कि नहीं कर रहा हूँ, या तो फ्री डिस्कशन कर रहा हूँ, जो कि नहीं कर रहा हूँ, या तो फिर यूपीएससी के लेवल की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, जो कि कर रहा हूँ। अगर ना ये कर रहा हूँ ना ये कर रहा हूँ, अगर ये भी नहीं कर रहा हूँ, तो फिर कुछ और कर रहा हूँ, है ना? यस, खुद भी तो पढ़ रहे हो इसी बहाने। यस एग्जैक्टली। तो कम से कम जब ये कर रहा हूँ तो ये तो नहीं कर रहा हूँ, इतना तो पक्का है। और कहीं ना कहीं ये तो चाह रहा हूँ कि मैं कुछ चीज़ें कम कर दूँ। एग्जाम, अरे एग्जाम तो देना, तो एग्जाम के लिए 7 दिन के लिए, 7 दिन के अंदर थोड़ा पढ़ा जाता है। एक बात बता रहे हैं, इसेंशियली ये कर रहे हैं कि जब लाइव में यहाँ पे यूपीएससी लेवल की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, भले कोई पढ़ रहा हो चाहे ना पढ़ रहा हो, लेकिन मुझे लगता है ऐसा होता नहीं है ना? तुम अगर 200 घंटे सच में पढ़ा लो यहाँ पर ऐसे, 10 तो आ ही जाएंगे कम से कम, या फिर नहीं भी आएंगे तो पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो। बट ये कि जब ये कर रहे हो तो फिर ये तो नहीं कर रहे हो ना, फिर तुम आईपीएल तो नहीं देख रहे हो, है ना? या फिर कोई भी मूवी तो नहीं देख रहे हो, डांस तो नहीं कर रहे हो, है ना? या फिर कुछ भी कह लो उसमें, गाना तो नहीं सुन रहे हो, तो ऐसा है। तो ये कर रहे हैं तो कम से कम ये सब में से तो कुछ नहीं कर रहा है। इस प्रोसेस में आई गेस कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, बाकी पता नहीं।
होगा तो ठीक, ना हुआ तो ठीक, देखा जाएगा। ये है। हम्म। ओके। वैसे ये मैं पहली बार कर रहा हूँ यूट्यूब पे इस तरीके से, अभी तक मैंने ये नहीं किया यूट्यूब पे। यूट्यूब पे सीपीसी पढ़ाया नहीं। चलो मुझे भी पढ़ना है, आप लगे रहो। हाँ यस, तुम भी पढ़ो। वेरी गुड। चलो लेट्स मूव। तो भैया 500 साल की जो हिस्ट्री है ना, वो तो समझनी पड़ेगी। स्पेशली 1453 टू 2023। है ना, इम्पोर्टेंट तो इसके पीछे की भी हिस्ट्री होगी ऑब्वियसली। है ना, 10,000 साल पहले हम लोगों ने खेती शुरू की थी। यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। है ना, हम लोग यहाँ पे आ गए, इससे आगे भी जाएंगे ऑब्वियसली। 2123 में धरती तो होगी होगी, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। है ना, धरती पे इंसान होंगे या नहीं होंगे वो बात अलग है। ठीक, बट धरती जरूर होगी, धरती कहीं कुछ नहीं होने वाला, डोंट वरी। फिर यूनिवर्स को तो कुछ नहीं होने वाला, उसमें मैटर और स्पेस तो है ही है। है ना, एक्सप्लोजन होगा, वो कुछ भिड़ेगा फिर दूसरों से जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट द यूनिवर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक। चलो, नाउ लेट्स मूव। जो भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। तो 1453, एक यूरोप है। यूरोप ने रिलीजन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, और उसमें उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस, इन तीन चीजों को एक सेंस में कह सकते हो कि डेमोक्रेसी या फिर इलेक्शंस, इन चार चीजों को जन्म दिया। ठीक है, और फिर ये इन चार चीजों को लेके फैल गए एशिया में। कुछ लोग यूरोप से निकल के चले गए यूएस में। ठीक है, एंड थिंग्स लाइक दैट। यूरोप में कौन कौन था, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप? फ्रांस, यूके। ठीक, इनका ब्रिटिश एम्पायर था ही था। अफ्रीका को भी इन्होंने डिवाइड किया ठीक सेंट अमाउंट में। और अभी भी आज टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, साइंस में भी आगे हैं, बिजनेस में भी आगे हैं, इलेक्शंस में भी आगे हैं। ठीक। लेट्स मूव। बात करते हैं थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की। देखो टेक्नोलॉजी में क्या क्या आ चुका है, एक तो ट्रांसपोर्ट की टेक्नोलॉजी है, रेल्स हैं, व्हीकल्स हैं, एरोप्लेन, और इवन अगर तुम देखो तो फिर मिसाइल्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी में आ जाएगा सब, स्पेसशिप्स। छोटे में देख लो तो कंप्यूटर और स्मार्टफोन। है ना, हाँ टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, फिनटेक्स है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एडटेक है, एग्रीटेक है। ठीक है, टेक्नोलॉजी अलग अलग सेक्टर्स के अंदर छमा गई है, समा गई है, नॉट छमा गई है। ठीक है, और ज्यादा ही समाएगी, अब तो एआई भी आ ही रहा है, आई कह रहा, आ गया ही ऑलमोस्ट। ठीक है, आईटी, देयर इज आईटी, और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हल्का फुल्का इंजीनियरिंग भी, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो और क्या करा जाए? रेलवे हैं तो रेलवे के प्लेटफॉर्म्स भी हैं,
लैंड चाहिए होता है, इसके लिए भी व्हीकल्स के लिए सड़कें चाहिए, इसके लिए भी लैंड चाहिए, एयरप्लेन्स के लिए एरोप्लेन चाहिए, मतलब एरोप्लेन्स के लिए एयरपोर्ट चाहिए, उसके लिए भी लैंड चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। धरती है, धरती पे तीन चीजें तो हैं ही हैं, लैंड, वाटर एंड स्काई। बेसिकली एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। और बाहर तो स्पेस है ही है। करेक्ट। लैंड में बहुत सारे कंट्रीज हैं, और अर्थ के अंदर भी घुसोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, लेयर्स हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह तो सिस्टम है ही है। लेट्स मूव। चलो भैया, और क्या बताया जाए। हाँ, अर्थ पे है बहुत सारा नेचुरल एनवायरनमेंट, ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वाटरफॉल्स, और माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ठीक है। अर्थ पे दो चीजें और है, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। इन दोनों से मिलकर बनती है तुम्हारी क्लाइमेट। बहुत सारे यहाँ पर एनिमल्स हैं, प्लांट्स और होमो सेपियंस तो है ही हैं। लेट्स मूव। और क्या बताएं। हम्म। इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र। पांच है ही ऑब्वियसली उधर वाली। इंडस, रावी, चेनाब, झेलम, और कौन सी है, एक कोई और है यार, पीर पंचाल, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ये कोई और है, चेक कर लेना। ठीक है। छोटी मोटी और भी बहुत सारी हैं साउथ में, जी के, यानी कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी भी एक है। दो और है, नर्मदा तापी, नर्मदा तापी, बीच में तुम्हारा विंध्याचल है वहां पर, जिसके नीचे बीजेपी नहीं जा पाती, जनरली जाती तो वापस आ जाती है, जैसे कि अभी हुआ है, कर्नाटक में हार गई है। लेट्स मूव। अरे भाई तुम मत मूव हो, मुझे मूव होना है। हाँ जी, ठीक है। ये है प्यारा सा इंडिया। अरे कहाँ चला गया भाई। थोड़ा इस टाइप का ही ऑलमोस्ट। बे ऑफ बंगाल, इसको अब चाहो तो अबे बंगाली बोल सकते हो। नहीं, ये नहीं बोल सकते हो, ये बे है, अबे नहीं है। दिस इज अरेबियन सी। यहाँ प्यारा सा एक मिनी इंडिया टाइप का बांग्लादेश है, जिसकी ढाका में बहुत सारी खराब सड़कें तो नहीं है, मतलब ये रहा आपका श्रीलंका। यहाँ पे मारकाट हुआ था 2022 में, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया था, फॉरेक्स बेसिकली कम हो रहा था इनका, फॉरेक्स वाज डाउन, टूरिज्म इंडस्ट्री वाज डाउन। और उसके पहले शूटिंग हुई थी यहाँ पर, शूटिंग, फिल्म की शूटिंग नहीं, वो गोली वाली शूटिंग, जैसे से चलती है वैसे से लग जाती है तो लोग मर जाते हैं, है ना। तो हाँ भाई, जिसका ट्रेजेक्टरी ऐसे जाता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, 2D मोशन में। खैर, लेट्स मूव। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़,
वेस्ट बंगाल, बिहार, सिक्किम, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। हेलो हाय, कैसी हो तुम? और क्या भाई, कुछ छूट रहा है क्या? ये ठीक है, थोड़ा मिल जाओ भाई आसपास, क्या दिक्कत है? अम्म, और उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर, चाइना है ये। बस, ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, ऐसा सीन है। लेट्स मूव। और क्या बताऊं? यस, इंडिया में होते हैं इलेक्शंस, बहुत जगह होते हैं, और इंडिया में भी होते हैं। कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कई बार बता चुका हूँ। दो तरह की पार्टीज होती है इंडिया में, कम से कम, नेशनल एंड रीजनल। ये है 54 के आसपास, ये है 10। इसमें सीपीआई एक है, सीपीआईएम भी है, जो लोग काफी डाउनफॉल पे एक्चुअली में। बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी एंड थिंग्स लाइक दैट, इस तरीके से है। रीजनल में आ जाएगी तुम्हारी एसपी, शिवसेना, डीएमके, बीआरएस जो कि पहले थे टीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, इसके पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति थी। मैं भी अपना नाम रखने जा रहा हूँ, विवेक भारत राय। नाम बदलने से कुछ तो होता ही होगा। सो ये है। और भारत राय कर लेता हूँ इसे, बी आर से, बी आर अच्छा लगता है, बी आर चोपड़ा ऐसा से भी, है ना? तो शिवसेना है, आम आदमी पार्टी है, पंजाब में है ये, टिंग टिंग टिंग। और आरजेडी, और और कौन सी, पीडीपी, बहुत सारी हैं ऐसे तो, टीएमसी भी है ना? चुनाव वगैरह लड़ते हैं ये लोग, लोकसभा में सीटें जीतते हैं। ऐसे करके घूम फिर के, नई बाय द वे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेट हो गई है। अगला सेशन जहाँ तक उसी में लगेगा। ओके, तो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन कमीशन कराती है। इलेक्शन दो तो होते ही हैं, कम से कम, होते ज़्यादा हैं और, बट स्टेट के इलेक्शन, असेंबली इलेक्शंस और जनरल इलेक्शंस, जो कि 2024 में होने हैं। और स्टेट इलेक्शन तो ऑलमोस्ट होते ही रहते हैं, घुमा फिरा के 4-5 स्टेट में ऑलमोस्ट हर साल ही हो जाते हैं। ठीक। ठीक। और हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, इसका प्रेम्बल है, ठीक है। फिर इसके कुछ पार्ट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, बहुत क्रूशियल पार्ट है ये। फिर तुम्हारे यूनियन गवर्नमेंट के पार्ट हैं, इससे जुड़े हुए आर्टिकल है, और स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े हुए आर्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से जुड़े हुए आर्टिकल है, और भैया सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सेंटर स्टेट रिलेशंस के आर्टिकल है। करीब 100 इसमें है, 100 के आसपास शायद इसमें भी है, 100 के आसपास इसमें भी है। और जो कुछ पोस्ट आपकी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, है ना, इस तरीके से है। पीएम, है ना, सीएम का तो इसमें आ ही जाता है घुमा फिरा के। तो ऐसा है, तो करीब 1, 2, 3, 300 के आसपास तो इसमें हो जाते हैं। ठीक है। 36 से 51 ये है, 13 से 32 जहाँ तक मुझे याद है ये है। ठीक है, तो करीब 350 तो यही हो गए, और थोड़े और घुमा फिरा के ऊपर नीचे आसपास 450 के आसपास आर्टिकल है। ठीक है, तो इतना है जी। और अब बाकी का मैं बाद में बताऊंगा, इतना बहुत है, 40 मिनट इज ओके। इससे हमें समझ में आ गया कि पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री वगैरह तो हमें पढ़नी ही पड़ेगी, आर्टिकल वगैरह वी विल कीप डिस्कसिंग। ठीक। तो
Bye bye.